अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में ज़िक्र कंदासीं बैरिया टाउन साज़िश केस जे हवाले सां। बैरिया टाउन साज़िश केस में अॼु सिंध हाईकोर्ट पारां 33 मां 27 केस ख़त्म करण जो हुकुम ॾिनो आहे। सिंध लीगल एड जे वकीलनि पारां सिंध हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई, जंहिंमें मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो हो त हिकिड़े वाक़े जा हिक खां वधीक केस दाख़िल नथा थी सघनि, जंहिं ते अदालत पारां अॼु फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। अदालत प्रोसिक्यूटर जनरल खां पुछाणो कयो त ॿुधायो वञे हिकिड़े ई वाक़े जूं 33 FIRs कीअं दाख़िल कयूं वियूं आहिनि। हर FIR में साॻी ॻाल्हि लिखियलु आहे त हिकु ई माण्हू हिक ई वक़्त में बाहि बि ॾिनी, पथराव बि कयो, रोड बि ब्लॉक कयो ऐं भञ ड्राह बि कई, जंहिं ते प्रोसिक्यूटर जनरल जो चवणु हो त असां 27 केस ख़त्म करे रहिया आहियूं, बाक़ी रहियल केसनि जा चालान जमा कराईंदासीं, जंहिं ते अदालत 27 केस ख़त्म करण बाबति 5 ॾींहनि में ATC कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराइण जो हुकुम ॾिनो आहे, जॾहिं त रहियल 5 केसनि बाबति बि अदालत प्रोसिक्यूटर जनरल खां 28 सेप्टेम्बर ते जवाब तलब करे वरितो आहे। उन सां गॾु अदालत पारां प्रोसिक्यूटर जनरल खां पुछाणो कयो वियो आहे त अदालत खे ईंदड़ ॿुधणी ते ॿुधायो वञे त बैरिया टाउन वाक़े ते हिन वक़्त ताईं कहिड़ी जांच थी आहे। हुन बाबति बि अदालत खे ॿुधायो वञे। अदालत दरख़्वास्त गुज़ार खां इहो बि सवाल कयो त केतिरा कारकुन ऐं अॻुवाण गिरफ़्तार थियल आहिनि, जंहिं ते दरख़्वास्त गुज़ार इहो ॿुधायो त सैयद ज़ैन शाह समेत 7 ॼणा जेल में आहिनि, जंहिं ते अदालत जो इहो चवणु हो त जेकॾहिं ज़ैन शाह समेत ऐं ॿियनि ते ख़त्म कयल 27 FIRs खां अलावा ॿियनि केसनि में नामज़द न आहिनि त खेनि आज़ादु कयो वञे, जॾहिं त बाक़ी रहियल 5 FIRs में ज़ैन शाह, सजाद चांडियो ऐं ॿियनि अॻुवाणनि जा नाला अॻी नामज़द थियल आहिनि। अदालत दरख़्वास्तुनि ते वधीक ॿुधणी 28 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। बैरिया टाउन केस में अॼु ही अदालत जो वॾो फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे, जंहिं में वाज़े तौर ते कानून जी बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई वई आहे। केसनि मथां केस दाख़िल करे दॿाउ विझण जी कोशिश कई वई आहे। मजमूई तौर ते 6 जून बैरिया टाउन में थियल साज़िश बैदि हिन वक़्त ताईं 33 केस दाख़िल कया विया आहिनि, जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट जो वाज़े फ़ैसिलो इन बाबति मौजूदु आहे त कंहिं बि वाक़े जूं 1 खां वधीक FIRs दाख़िल नथियूं थी सघनि। 6 जून ते जेका साज़िश कई वई हुई उहा नाकाम थींदे नज़र अचे थी। बैरिया टाउन ख़िलाफ़ अॼु बि सिंध जे अवाम वटि उहा ई कावड़ आहे। ॿिए पासे सिंध एक्शन कमेटी जी क़यादत समेत कारकुननि ते केस दाख़िल कराया विया हुआ ऐं ॾाढ वसीले ख़ामोश करण जी कोशिश बि कई वई हुई, जॾहिं त सिंध एक्शन कमेटी पारां बि बैरिया टाउन ख़िलाफ़ तहरीक जे 4थे मरहले जी शुरूआति कई वई आहे। हुनजो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिंमें सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज कया वेंदा ऐं उन सां गॾु जलसा पिणु कया वेंदा। इन मामले ते हिन वक़्त ताईं जेके ख़बरूं साम्हूं आयूं आहिनि उन मूजिबि 28 सेप्टेम्बर ते इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त वधीक 5 केसनि में बि ज़मानत मंज़ूर थी वेंदी। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सिंध लीगल एड जा अॻुवाण आहिनि, सीनियर वकील आहिनि, मोहतरम जनाब मोहम्मद ख़ान शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेराज। वॾी महिरबानी तव्हांजी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़ारा, जॾहिं ही वाक़ियो थियो ऐं उन वक़्तु जॾहिं सॼी सिंध रद्द अमल ॾिनो, असां ॾिठोसीं वकीलनि बि इन मामले ते भरपूर निभायो ऐं हिकु वकीलनि जी टीम जुड़ी, अॼु नेठि कामयाबी मिली आहे। अवां कीअं पिया ॾिसो अॼु जे फ़ैसिले खे? अॼु जो फ़ैसिलो इंतिहाई माना दिलि खे ख़ुशि कंदड़ फ़ैसिलो आहे। असां जेका माना पहिरीं ॾींहं खां वठी चऊं पिया त ही नाइंसाफ़ी आहे, हिकु वाक़े जो 1 खां वधीक FIR नथो थी सघनि, ऐं उन जी सिलसिले जी फतेह आहे जो अॼु 27 FIR छा पर चालान में नाला अची चुका हुआ, जेके नौजवान जेके जेल मां आज़ादु थिया ऐं 8 तारीख़ ते उनजी पेशी हुई। हाणे जेका 20 तारीख़ ते कल्ह हुई पेशी ATC कोर्ट में, पर जिन जे मथां ॿिया केस हुआ, माना 60 ॼणनि जे मथां ॿिया केस हुआ, उहे कोर्ट में न अची सघिया। असांखे इहो हुयो त माना जेकॾहिं अचनि हा कोर्ट में त उहे अरेस्ट थी वञनि हा, जेल कस्टडी थी वञनि हा, जंहिंजे करे माना असांखे या त उनजी बेल बिफोर करायूं, पर एतिरनि माण्हुनि जी कराए बि कीअं पिया सघूं, छो त ग़रीब माण्हू हर कोई पंहिंजे खीसे मां हलियो पियो। पर अॼु जेको फ़ैसिलो असां पुरुमीद हुआसीं ऐं अॼु उन एक्सपेक्टेशन ते ई हली ॻाल्हि त 27 केस ख़तमु थी विया, बाक़ी 5 बचिया आहिनि, जेके बि 28 तारीख़ ते वरी जज साहिब जी माना पेशी रखी आहे, जिते आर्ग्यूमेंट थींदा, छो त अॼु पुलिस ई पाण माना असांजे प्रेशर में हुननि माना उहे 27 केस ख़तमु करे खणी आहे, जेका हिकु तमामु ख़ुशाइनि ॻाल्हि आहे। ऐं ॿियो इहो बि थियो त जेके नौजवान मां अदालत खे असां इहो बि ॿुधायोसीं त 7 नौजवान जेल में आहिनि, जिन जे मथां इहे 24 ॿिया केस बि आहिनि, 3
माना हिकु FIR नंबर 257, 258, 259 उहे अलॻि जेके मेन आहिनि सभिनी ते हुया ऐं 2 वरी माना आहिनि मलीर कोर्ट में केस जिन ते ATC न आहिनि पर उहे वरी मलीर कोर्ट मोकिलिया आहिनि। बाक़ी 27 FIR 27 चालान जिन जा इंटीरियम चालान बि जमा थी चुका आहिनि ऐं कोर्ट कागज़ी जज वठी चुकी आहे ॿुधा जी। माना हाणे जेको बि उन केस में अपीयर थींदो माना उहो जेल वञे आहे। तो तंहिंजे करे ही तमामु बहितरीनु फ़ैसिलो थियो आहे त हिन टाइम फ़िलहाल त उनजे मथां हिकिड़ी तलवार हटी वई जेके माना 60 ॼणा हुआ जिन जे मथां इहे केस लॻल हुआ जेके एक्स्ट्रा हुआ। हाणे उन में साईं जलाल शाह, डॉक्टर कादिर मक्सी, सुनान कुरैशी, अब्दुल खालिक जोनेजो उन्हनि जे मथां 24 FIR ऐं 24 चालान थियल हुआ जंहिंजे करे माना खालिक जोनेजो साहिब 24 केसनि में ज़मानतूं थियल आहिनि, बेल बिफोर अरेस्ट थियल आहे। जॾहिं त साईं जलाल शाह, डॉक्टर कादिर मक्सी ऐं माना उन्हनि जूं अञा ॿियनि केसनि में ज़मानतूं करायूं हुयूं। हाणे हिकु तरफ़ हिकिड़ो त माना इहा फतेह थी जो असांजी उहा पिली बनी वई। असांजी जेका इहा पिली हुई त हिक खां वधीक FIR नथी थी सघनि। अच्छा, इनमें शेख साहब इहो आगाह कजो ज़ाहिरा ही जॾहिं मामिलो साम्हूं आयो आहे जंहिं वक़्त खां असां ॾिठोसीं हुकूमत जी कोशिशि हुई पहिरें प्रोग्रामनि में असां इहो बि ज़िक्र करे चुका आहियूं त अचानक सां जॾहिं अदालतुनि में पेश थिए त वधीक केस बि साम्हूं अची वेंदा हुआ, इन क़िस्म जा मामला बि साम्हूं आया। हिन सॼे मामले ते मौक़िफ़ छा हुयो ॿिए पासे खां ख़ासि तौर ते प्रोसिक्यूटर जो छा मौक़िफ़ हुयो ऐं छा उहे हिन वक़्तु इन सॼे मामले ते कुझु प्रूफ नथा करे सघनि अदालतुनि में या पाण ई हाणे हथु खणणु चाहिनि था? ज़ाहिरा ॿिए पासे खां मामिलो असांखे थधो थींदो नज़र अचे थो। असल में ॻाल्हि इहा आहे त हुननि जेतिरो प्रेशर करे सघिया हुननि कयो, सरकार घटि कोन कई। ऐं हीउ बि जेको चालाननि जो सिलसिलो हुयो इहो घणे वक़्त खां ॿुधूं पिया त हीउ केस ख़तमु था कनि पर अॼु ख़तमु तेसि ताईं न कयो जेसि ताईं हिनखे ॾंडो न आयो। हाणे जेकॾहिं कल्ह बि हुई ATC कोर्ट में पेशी, उते छो न खणी आया पर हिते खणी आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हिनजे करे छो त हाई कोर्ट मूंखां सुपर आहे, उहो वज़ीर आला खां बि सुपर आहे। कोर्टूं त सभिनी खां सुपर आहिनि पर अॼु जॾहिं माना जज साहिबनि खां पुछियो त तव्हां छो न माना इहा अदालत में जॾहिं खणी विया त तव्हां कंसर्न कोर्ट में छो न खणी विया? पोइ हुननि चयो असांखे हाई अप्स खां मंज़ूरी वठणी। उन्हनि खे अदालत चयो त तव्हांखे हाई अप्स खां मंज़ूरी वठणी या तव्हांखे लॉ ते हलणो आहे। तव्हांखे लॉ ते हलणो आहे, लॉ जेको चए थो उहो करियो। जंहिंखां पोइ हुननि लिखी ॾिनो आहे त असां 2 ॾींहंनि जे अंदरि माना ऑर्डर्स में लिखियल आहे त 2 ॾींहंनि जे अंदरि हू ट्रायल कोर्ट में माना मैजिस्ट्रेट आहे त मैजिस्ट्रेट जी कोर्ट में, ATC कोर्ट जी माना एडमिनिस्ट्रेटिव जज वटि उहो जमा करंदा। उन्हनि हफ़्ते जो टाइम घुरियो पर अदालतुनि खे हफ़्ते जो बि न, ओनली 2 डेज़ ऐं कंप्लाइंस करियो। ऐं वरी माना उहा ई कंप्लाइंस जो ATC कोर्ट खे 5 ॾींहंनि जो ॾिनो आहे टाइम त इन्हनि 5 ॾींहंनि में इन्हनि खे ऑर्डर जारी करियो। अच्छा, क्विकली शेख साहब इहो आगाह कजो ज़ाहिरा जेको ऑर्डर साम्हूं आयो आहे या जेका अॼु जी ॿुधणी थी आहे उन में साईं ज़ैन शाह जी बि ॻाल्हि ॿोल हले पई ऐं ज़ाहिरा हू ॿियनि केसनि में बि आहे जेके केस अॼु ख़तमु करण जो अदालत हुकुम ॾिनो आहे। उन खां अलावा केसनि में बि साईं ज़ैन शाह जो नालो आहे। त सूरत हाल बाबति आगाह कजो त जेके बाक़ी 5 केस आहिनि उहे छा जा आहिनि ऐं अगरि अदालत सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले तहत कंहिं बि वाक़े ते हिकु ई FIR थियणी आहे त पोइ उहे 5 केस छो हिन वक़्त ताईं पेंडिंग आहिनि? हाणे ॾिसो न, असांजी जेका पिटीशन आहे इहा त हिकु वाक़े जूं हिक खां वधीक FIR नथी थी सघे। हाणे जॾहिं ही हिते हैंड्सअप करे आया 27 ऐं जेके 5 बचियूं न, हाणे असांजा आर्ग्यूमेंट हुन ते थींदा त इहो बि ग़लति आहे। 5 FIR बि छाजे लाइ, 5 केस बि छो? ऑफकोर्स माना इंसिडेंट त सेम आहे। हाणे उन जी स्क्रूटनी थींदी त उहा उनखे आर्ग्यूमेंट थींदा। असांजी टीम असां बि तयारी करे रहिया आहियूं, उन्हनि खे बि अदालत मौक़ो ॾिनो त तव्हां बि तयारी करे अचिजो। सॉरी, ऐं उन्हनि खे बि इहो चवनि त सभिनी वाक़िअनि जा सभिनी मुद्दनि खे, कंप्लेननि खे वठी अचिजो। सो हाणे उन्हनि खे बि मौक़ो ॾिनो त असांखे ॾिनो आहे त हाणे 28 तारीख़ 9:30 बजे फिक्स टाइम रखियो अदालत, माना टाइमिंग बि फिक्स थियल आहे। उन तारीख़ ते इहो आर्ग्यूमेंट थींदा। असांजा जेके दलील नेता आहिनि त
इहे 5 FIR बि ग़लति आहिनि। हिकिड़ी FIR में सेम इंसिडेंट आहे, सभु कुझु उन में विझी सघिजे थो। जहिड़ी तरह हू 27 C क्लास करे आया आहिनि, अहिड़ी तरह ई हिते बि हाणे बि सिर्फ़ु हिकिड़ी केस में इहे सभु मर्ज करियो। अच्छा अभिषेक साहब, अब ज़ाहिरा अवां शुरू खां इन सॼे मामले खे ॾिसो पिया, सईद ज़ैन शाह बाबति आगाह कजो, उन जी छा पोज़ीशन आहे ज़मानत वठण जे हवाले सां ख़ासि तौर ते, ऐं जेके ॿिया 5 केस आहिनि उन्हनि मां केतिरनि में अञा नालो आहे? साईं ज़ैन शाह जो सिर्फ़ु हिकिड़ी FIR में नालो आहे, FIR नंबर 259, जेका उसामा नाले सां उहो जेको बैरिया टाउन जो मैनेजर आहे उनजी कटायल आहे। साईं ज़ैन शाह, सजाद चांडियो, असलम खेरपुरी या मुराद कबूल, गुलहसन कलमती वग़ैरह सभु जेके बि आहिनि माना लीडरशिप खां अलावा उन्हनि ते इहा ई हिकिड़ी FIR आहे सभिनी ते, जेका हिननि 27 में शामिल न आहे। उहा 27 में शामिल आहे। अच्छा, 27 में ॿियूं FIR शामिल हुयूं जेके नवां चालान आया हुआ, छो त ही जेके आज़ाद थिया ज़मानत ते नौजवान, ये सुनान कुरैशी आज़ाद थियो, ॿिया आज़ाद थिया, आज़ाद थियण खां पोइ इहे चालान बाद में आया आहिनि। माना उनजे आज़ाद हाणे जॾहिं माना प्रॉब्लम इहो थियो जेके आज़ाद थी आया वरी उनजे लाइ हेॾा चालान अची विया त उनजे मथां पहाड़ सुठी पियो, त पहाड़ किरी पियो त हाणे छा करियूं, 24 केस मथां अची विया ऐं सुनान कुरैशी जे मथां 24 ॿियूं FIR अची वयूं। बहरहाल हाणे त उहे सभु शयूं ख़तमु थी वियूं हिन ऑर्डर खां पोइ। बाक़ी हाणे 5 FIR रहनि थियूं ऐं सिर्फ़ु ज़ैन शाह जे मथां हिकिड़ी आहे 259, जेका माना हुनजी आहे मैनेजर आहे उसामा, उन जी आहे। तो हाणे माना उन में बहितरी थी सघे थी। साईं ज़ैन शाह जी ज़मानत जे हवाले सां पुछियो त हू मालिक पाण आहे ऐं हू ज़मानत अञा ताईं इन में न आहे त मां ज़मानत वठां, वधीक मालिक आहे, असीं त वकील आहियूं सिर्फ़ु। ठीक है, वॾी महिरबानी मोहम्मद ख़ान शेख साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरा बैरिया टाउन वारो मामिलो 6 जून ते जेका साज़िश थी उन खां पोइ केसनि मथां केस दाख़िल कया विया। अदालतूं बि इहो चवनि पियूं त हिक ई वाक़िए जूं एतिरियूं FIR कीअं दाख़िल कयूं वियूं आहिनि, उन में वाज़िह तौर ते कूड़ो साबित कयो वियो आहे, अदालतुनि पारां साबित कयो वियो आहे। न सिर्फ़ु एतिरो पर जेके केस हुया FIR दाख़िल कयूं वियूं उन में हिक ई वक़्त में हिक ई जाइ ते मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे जिन खे ॾेखारियो वियो हो उहो को बाहि पियो ॾे, साॻिए वक़्त में उहो भञिट्रा करे पियो, साॻिए वक़्त में उहो पथराव करे पियो, साॻिए वक़्त में उन रोड ब्लॉक कयो, साॻिए वक़्त में उहो ॿियनि मामलनि में बि मुलविस हो। त अहिड़े तरीक़े सां ही केस दाख़िल कराया विया। हीउ जेको मामिलो आहे इहो पुठिते थींदे नज़र अचे पियो। वाज़ तौर ते सईद ज़ैन शाह जे हवाले सां जीअं ॿुधायो शेख साहब त हू हिन वक़्त ताईं ज़मानत वठणु न पियो चाहे। पाण ज़िक्र कंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन में हलंदड़ तकरार जे हवाले सां। वक़्तु हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलेकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां इलेक्शन कमीशन ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत विच में वाज़िह तौर ते इख़्तिलाफ़ नज़र अचनि पिया। इख़्तिलाफ़नि जो मामिलो उन वक़्तु शुरू थियो जॾहिं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ते अपोज़िशन खां पोइ इलेक्शन कमीशन पारां बि एतिराज़ वारिया विया। उन्हनि ॿुधायो त कहिड़ियूं ग़लतियूं आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़रिए बि धांधली थी सघे थी। मुसलसिल आज़म सवाती ऐं फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन ते इल्ज़ाम मढ़नि पिया, उनजो सिलसिलो जारी आहे। काल्ह बि इन बाबति ॻाल्हि ॿोल फवाद चौधरी पारां कई वई ऐं अॼु वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में भी इन मामले ते बहस थियो आहे त इलेक्शन इस्लाहात ऐं उन सां गॾोगॾु EVM लाइ कीअं अॻिते जे लाइ कहिड़ो लाइ अमल जोड़णु घुरिजे ऐं ख़बरूं इहे बि अचनि पियूं त हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे हटाइण जो सोचे पई। वफ़ाक़ी हुकूमत हिन वक़्तु इहो चाहे पई त ईंदड़ चूंडूं उन्हनि जी मर्ज़ी मूजिबि थियनि ऐं ख़ासि तौर ते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इस्तेमालु थिए त जीअं आसानी सां धांधली थियण में का एॾी वॾी ॾुखियाई साम्हूं न अचे। हालांकि जेको हिन वक़्तु ताईं नैरेटिव साम्हूं अचे पियो, खणी पोइ इलेक्शन कमीशन जो हुजे या
जिते ॿियनि मुल्कनि में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इस्तेमालु थिए पियो त घटि में घटि उन जे लाइ 3 साल जो अरसो घुर्बल हूंदो आहे त जीअं उन जी आज़माइश बि थिए, उन खां पोइ वॾे पैमाने ते उन जो इस्तेमालु बि करे सघिजे। हिन वक़्त ताईं इलेक्शन कमीशन बि उन ते राज़ी थींदे नज़र नथी अचे ऐं ज़ाहिरा इलेक्शन कमीशन नोटिस वरितो हुयो, पर हिन वक़्त ताईं का वॾी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पारां बि नाहे कई वई। इन ई मामले ते ख़ासि तौर ते कुझु ॾींहं पहिरियां इहे ख़बरूं बि साम्हूं आयूं त फॉरेन फंडिंग केस जेको PTI ख़िलाफ़ गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हलंदड़ आहे, उन ते बि इलेक्शन कमीशन पंहिंजो फ़ैसिलो कंहिं वक़्तु बि ॿुधाए सघे थी। आज़म सवाती जे हवाले सां इन फंडिंग में उन जो बि नालो आयो हो ऐं हिकु डॉक्यूमेंट बि सोशल मीडिया ते सर्कुलेट करे पियो, जंहिंमें बि वाज़े तौर ते आज़म सवाती जो ज़िक्र थियल आहे। मामिलो सिर्फ़ु एसि ताईं महदूद न आहे, डस्का जे चूंडुनि जे हवाले सां बि उते जेके प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर कहिड़े तरीक़े सां गुम थिया ऐं कीअं धांधली जी कोशिश कई वई, उन बाबति बि इलेक्शन कमीशन पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए सघे थी। ऐं इहो बि हिकु तासुरु ॾिनो पियो वञे मुसलसिल त जंहिंजे करे हुकूमत पंहिंजो जेको रुख़ आहे तोपुनि जो उहो इलेक्शन कमीशन ॾांहुं कयो आहे। मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन ते जॉइन कयो आहे अॻूणा सेक्रेटरी आहिनि इलेक्शन कमीशन जा मोहतरम जनाब कंवर दिलशाद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर हुकूमत की ये कोशिश है और मुसलसल हम देख रहे हैं वज़रा के बयानात, और आज इस मामले पर वफाकी काबीना में भी बातचीत हुई है कि हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात चाहती है, और पहले तो अपोजिशन पर बात होती थी और आजकल इलेक्शन कमीशन पर बात होती है। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और आपकी इस पर क्या राय है कि हुकूमत के ज़हन में इस वक्त क्या चीज़ चल रही है? देखिए, जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात का ताल्लुक है वो तो दुरुस्त है। इंतखाबी इस्लाहात में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आइंदा के इंतखाबात के लिए बड़ी एक रहनुमा असूल बनाने में मामल साबित होंगे। बड़ी उसमें चंद शिकें दफात करने पड़ी हैं, वो दुरुस्त है, लेकिन उसी इंतखाबी इस्लाहात में कुछ 13-14 सेक्शन ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एतराज़ किए हैं और कहा है कि ये अच्छे मुतसादम है। और वो भी अब हुकूमत अगर वो जो आइन से मुतसादम है वो उसको निकाल देती है तो बाकी जो इस्लाहात है वो बेहतर है, वो ठीक है। उसके अंदर बाकी रह गया, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट कल्ट्री के जरिए वोट देने का हक देने का भी एक उसमें जिक्र है, उसी तरमीम की गई है जो इंतखाबी इस्लाहात में। लेकिन ये हुकूमत जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रही है तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रात तो बहुत ज्यादा उनकी गैर जानबदारी पर 22 करोड़ अवाम ने मोहर लगा दी है। देखो नहीं, आप असूली बात है, आपको तो पता ही नहीं है कि अपनी स्ट्रेटेजी है, वो पता नहीं कहाँ से वो अपने सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन असूली तौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर आप जैसे दानिशवर सोचें कि जिस इदारे पर यानी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर हमेशा अपोजिशन तनकीद करती आई तो इलेक्शन कमीशन का स्टैंडर्ड इंतहाई कमजोर होता चला गया और ये आवाम ने तसव्वुर लिया कि ये इलेक्शन कमीशन हुकूमत का ही एक ज़ैली इदारा है। वो हमेशा रहा, हमारे ज़माने में भी रहा, हम भी इस पर दौर में गुजरे हैं। लेकिन अब जो हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म से लेकर उनके सारे वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ार कर रहे हैं, उन पर धमकियां दे रहे हैं, उन पर एक तरह इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उससे आवाम ने ये महसूस किया कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो गैर जानबदार हो गया है, तो हुकूमत की जो है उनकी पॉलिसी पर वो नहीं चल रहा, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी पर मोहर लगा दी। ये हुकूमत को महसूस ही नहीं हो रहा। अब वो इलेक्शन कमीशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक वजीर आजम जो है वो एक चपड़ासी जो होता है पीएन ग्रेड 1 का, उसको तो बरतरफ नहीं कर सकता। आप चीफ इलेक्शन कमीशन पे कहाँ हाथ डाल सकते हैं, मेंबर इलेक्शन कमीशन पे कहाँ हाथ डाल सकते हैं? अपने एक चपड़ासी को तो निकाल के देखें, दूसरे रोज वो जाएगा हाई कोर्ट का स्टे ले लेगा। तो ये तो मामला ये है। ये हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। बाकी जो आप मर्जी आप इल्जामात लगाते रहें, इल्जामात आवाम सुन के भी तंग आ गई है, खामोश रहेगी, कोई बात नहीं। इल्जाम तो सब पे लग रहे हैं, कोई आदमी महफूज नहीं है। वज़ीर आज़म कौन से महफूज है, उन पर भी इल्जाम लग रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर जो वफाकी उज़रा की तरफ से ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है एक पूरे इदारे की तरफ से, उसकी भी किसी तौर पर भी सपोर्ट नहीं हो सकती और ज़ाहिर उस पर मुसलसल तनकीद हो रही है।
آپ تھوڑا سا یہ آگاہ کیجئے گا یہاں تک معاملات پہنچے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک پورا تحریک انصاف کا خاص طور پر چاہے وہ فارن فنڈنگ والا معاملہ ہو، آپ نے ذکر کیا کل کسی پروگرام میں ڈسکا الیکشنز کا، اور اس کے علاوہ بھی کافی ایسے معاملات ہیں، پھر سواتی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا کوئی ایسی چیز کی تیاری کر لی ہے الیکشن کمیشن نے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے ریسپانس آ رہا ہے تاکہ کل وہ کہہ سکیں ہم تو کہہ رہے تھے اور یہ دیکھیں الیکشن کمیشن حکومت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ اصولی طور پر آپ نے درست فرمایا، مجھے بھی کنسرن ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی جو ان کے پاس اختیارات رہے ہیں انہوں نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اب یہ بھی آپ درست فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی پوری ہسٹری پر ہم غور کریں تو کوئی ایسی کوئی قابل تقلید مثال نظر نہیں آتی جس پر الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی ذمہ داریاں پوری کی ہوں، یہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو کہ اب نیا سسٹم آ گیا ہے، نئے چیف الیکشن کمیشن آئے ہیں، ان کی کوئی بیوروکریٹک سوچ ہے، وہ جوڈیشری والی سوچ رہی ہے، جوڈیشری کے ججوں والا کرنٹی نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو صحیح نہیں، انہوں نے اختیارات ہی نہیں دیے گئے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بے بس ادارہ ہے، بیت المال کی طرح کام کر رہا ہے، کوئی کام اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب تو اگر پریزائڈنگ آفیسر اگر غلط کام کریں، اگر وہ کوئی رشوت لے لیں، کرپشن لے لیں، رزلٹ چینج کر دیں، ٹیمپرنگ کر دیں، تو الیکشن کمیشن پاکستان پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایکشن لے لیں۔ وہ ایکشن لیں گے چیف سیکرٹری کے ذریعے، سیکرٹری ایجوکیشن کے ذریعے، انہوں نے تو جواب ہی نہیں دینا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی عدالتی اختیارات نہیں ہے کہ اگر کوئی ریٹرننگ آفیسر یا چیف سیکرٹری یا وزیر اعلیٰ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرتا ہو تو اس کو اس کے خلاف ایکشن لے لیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ انڈیا کے الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیارات ہیں جو وزیر اعظم ہند کے پاس نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہند کسی کو برطرف نہیں کر سکتا، لیکن چیف الیکشن کمیشنر وزراء کو اور وزیر اعظم کو بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں ان کے پاس، عدلیہ اختیار، اس کے پاس قانون سازی کے اختیار ہے۔ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا، قانون کو سازی کرنی لازمی ہو گئی ہے، تو الیکشن کمیشن آف انڈیا قانون سازی کر سکتا ہے، بعد میں وہ بیٹھ کر دے گی، پارلیمنٹ جو ہے منظوری دے دے گی۔ یہاں پہ اختیاری کوئی نہیں ہے الیکشن کے اوپر، یہ کسی نے نہیں سوچا، نہ ہماری سیاسی جماعتوں نے، نہ میڈیا نے، کسی نے نہیں سوچا۔ ہم نے ساری رپورٹ بنا کے چیف الیکشن کمیشن کو دی کہ جناب اپنے اختیار تو مانگے، آپ کے پاس تو اختیاری کوئی نہیں ہے۔ اب آپ الیکشن ٹریبیونل کو فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ قاسم سوری صاحب بیٹھے ہوئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، اب ٹھیک ہے ڈپٹی اسپیکر ہے، بیٹھے جب تک ہیں، الیکشن ٹریبیونل بلوچستان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ جناب ان نے جعلی طریقے سے یہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، اور ناظرہ کا اس وقت کا چیئرمین، اب تو ناظرہ کے چیئرمین ایک پولیٹیکل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، جو ایک ٹیکنیکل پروفیشنل جو تھا، اپنے مبیر عثمان نے رپورٹ دی کہ جناب 50,000 آپ کے جو آپ کے ووٹروں نے اپنا جو کیا، ان کے انگوٹھوں کے نشان جو ہیں وہ جعلی ہیں اور وہ پاؤں کے نشانات ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے کون پوچھے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد فردوس میں جگہ دے، کہ جناب وہ ابھی تک اسٹے دیا ہوا ہے، اس پر کاروائی نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں، اب الیکشن کہاں جائے گا؟ فیصلہ الیکشن ٹریبیونل کرے، ہماری ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ اسٹے دے دیتی ہے 4 سال کے لیے۔ اور جتنے بھی اب اگر آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے بھی دیا تو رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جائیں گی، رات کو 12 بجے سر پھر یہ قمر صاحب صرف عدالتوں کا معاملہ ہے یا کہیں اور سے بھی ظاہر الیکشن کمیشن کو اس طرح کے احکامات ملتے ہیں، جسے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو فون کیا تو پھر نتیجہ تبدیل بھی ہوا؟ خواجہ آصف جھوٹوں کا بادشاہ ہے نا، اس کو یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی میں نے فون کیا تو میں جیت گیا؟ اس کو تو شرم آنی چاہیے تھی یہ باتیں کرتے ہوئے، اور بغیر لوگ ہیں بس ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم نے فون کیا آپ جیت گئے۔ اس بے شرم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ میں تو عارضی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ایم این اے بنا، یہ تو نہیں سوچے گا وہ۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، بے شرم آدمی تو آرمی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس بیان کو خواجہ صاحب کے اب تک نہ اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے، نہ ہی اس کو ڈینائی کیا گیا ہے۔
लड़ाई करने की जरूरत क्या है, किसी को अहमियत ही कोई नहीं, लड़ाई वहाँ होती है जिस आदमी की अहमियत होती है, उसको कोई अहमियत ही कोई नहीं है और सब जानते हैं। खुदा वो कहने की जरूरत क्या थी, कई बात ये थी कि इसलिए अहमियत नहीं दी, वो कह रहे ये बकवास कर रहा है, करने तो हमने क्या इसकी लड़ाई करना है। तो ये इसी तरह से हमारी कोई नहीं, ये हमारी अदलिया से कोई पूछा जाए कि जनाब अदलिया से पूछा जाए कि कासिम सूरी साहब का फैसला कब करेंगे, 2024 में करेंगे, नए इलेक्शन के बाद करेंगे? आप नहीं किया ना, हमारी अदलिया ने स्टे में बैठा हुआ ना, स्वार्थ कर रहा है, स्पीकरशिप पर बैठा हुआ है, सारा काम कर वही का जो किसी को भी कह दें, जिसको भी आप निकाल दें, किसी को भी निकाल दें, जो उसी वक्त उसके आर्डर ले लेके बैठ जाते और फिर कोई कानून की पासदारी नहीं करते। अब कानून में क्या लिखा हुआ है? कानून में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का उसको आईनी इस्तेकाक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 30 दिन में करना है। कहाँ फैसले किए भाई उन्होंने? नहीं किए। ज़ाहिरी तौर पर वो चीज़ें भी हमें नज़र आ रही। बहुत शुक्रिया आपका कंवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिन वक्त ताईं हुकूमत इलेक्शन कमीशन में तकरार नज़र अचे पियो। वाज़े तौर ते हुकूमत इहो सोचे पई त कीअं चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे हटाइजे। हुकूमत जी कोशिश आहे इस्लाहात जे नाले ते उहे शयूं आंदियूं वञनि जेके ईंदड़ चूंडुनि में हुकूमत जे लाइ आसानी जो सबबु बणिजनि, पर उहे इन ते हिन वक्त ताईं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बि राज़ी थींदे नज़र नथो अचे। इन मुल्क में शफ़ाफ़ चूंडुनि वारो सवाल जीअं जो तीअं मौजूदु आहे। पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु 16,000 मुलाज़िमनि खे कढण वारो जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो उन बाबति क़ौमी असेंबली में बहस थियो आहे। उन ते हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं उन्हनि मुलाज़िमनि जे हवाले सां जिन खे कुझु ॾींहं पहिरियां कढण जो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो हुयो। सुप्रीम कोर्ट पारां इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो हो जस्टिस मुशीर आलम जी सरबराही में जुड़ियल बेंच पारां, ऐं उन जी नौकरी जे आख़िरी ॾींहं ते इहो फ़ैसिलो ॾिनो वियो त 16,000 मुलाज़िमनि खे नौकरियुनि मां कढियो वञे, छो त उहे सियासी भर्तियूं आहिनि। 1993 ऐं 96 में थियल भर्तियुनि खे सियासी भर्तियूं करार ॾेई काडर वसीले हज़ारे माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो वियो। कुझु ॾींहं पहिरियां उन फ़ैसिले ते अमल दरामद जे लाइ काबीना पारां बि मंज़ूरी ॾिनी वई हुई ऐं उन ते अमल दरामद जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो हो, जंहिं तहत वफ़ाक़ी खातनि मां हज़ारे मुलाज़िमनि खे हिकु नोटिस ते कढियो बि वियो। सुई सदरन गैस कंपनी जे 2900 खां मथे मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ बि कयो वियो, जॾहिं त FIA समेत ॿियनि वफ़ाक़ी खातनि मां बि मुलाज़िमनि खे कढण जो सिलसिलो जारी हो। हिन मामले ते सॼे मुल्क मां बरतरफ़ मुलाज़िमनि पारां एहतिजाज कयो वियो। न सिर्फ़ एतिरो पर मुख़ालिफ़ दुर्जे पार्टियुनि पारां बि हिन फ़ैसिले जी भरपूर नमूने सां मुख़ालिफ़त कई वई, जंहिंमें पीपुल्स पार्टी अॻु भरी नज़र आई। इस्लामाबाद में बरतरफ़ थियल मुलाज़िम मुसलसिल एहतिजाज कनि पिया ऐं नेठि वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते खे बि अहसासु थियो आहे। हिन मामले जो एहसास उन वक़्तु थियो जॾहिं कुझु वफ़ाक़ी वज़ीरनि मुलाज़िमनि सां मुलाक़ात कई ऐं उन बाद अली मोहम्मद ख़ान ऐं परवेज़ खटक सां मुलाक़ात बाद वज़ीर आज़म सां अली मोहम्मद ख़ान ऐं परवेज़ खटक मुलाक़ात कई ऐं उन फ़ैसिले ते नज़रसानी करण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो हो। अॼु क़ौमी असेंबली में ही मामिलो पहुतो जिते शाज़िया मरी सां गॾोगॾु अपोज़िशन जे कुझु पार्लियामेंट जे मेंबरनि पारां हिन मामले ते छिती तनक़ीद कई वई ऐं उन बाद अली मोहम्मद ख़ान जो इहो चवणो त हिन मामले ते वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात थी आहे, हिन मामले ते नज़रसानी करण जो वफ़ाक़ी हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अली मोहम्मद ख़ान जो हिन बाबति छा चवणो अचो त सभु खां पहिरियों ॾिसो। अली मोहम्मद ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, वफ़ाक़ी हुकूमत रिव्यू पटिशन जो सोचे पई ऐं ज़ाहिरा जेको ही फ़ैसिलो वफ़ाक़ी हुकूमत कयो आहे उन ते जेका मुसलसिल तनक़ीद थिए पई, उन ते सोचे पई वफ़ाक़ी हुकूमत इन फ़ैसिले खे वापसि वरितो वञे। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कियो आहे सीनियर कानूनदान आहिनि, हिन मामले खे मुसलसिल फॉलो कनि पिया, इश्तियाक चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, ज़ाहिर जब मुशीर आलम साहब का आखिरी दिन था तो वो ये फैसला देकर गए वो, और हमने देखा इस पूरे मामले पर पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं। ज़ाहिर 16,000 ख़ानदान हैं वो जो इस फैसले से मुतासर हुए हैं। फिर हमने देखा हुकूमत ने काबीना से इसकी मंजूरी दी और बाद में हुकूमत को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और रिव्यू में अब वो जा रहे हैं। आप किस तरह से मामले को देख रहे हैं और इस वक्त क्या पोजीशन है? देखें, गरचे जो एहतजाज था वो ख़त्म हुआ हुकूमत की गारंटी के ऊपर कि हुकूमत इन मुजाहरीन के साथ खड़ी है। बज़ाहिर तो हुकूमत ने ये ऐलान किया कि मुजाहरीन के साथ खड़ी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती
کہ جب حکومت اگر ساتھ کھڑی ہے تو حکومت کے پاس کیا کیا آپشن ہے، وہ تو یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے، ایک ہفتے کے اندر حل کر سکتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر اسپیسیفکلی ایڈریس بھی کیا تھا اس ایشو کو، میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ نمبر 1 حکومت آرڈیننس لے کے آئے اور ان نو ٹائم جو ہے ود ان اے ویک جو ہے آرڈیننس کے تحت یہ تمام ملازمین واپس آ سکتے ہیں۔ نمبر 2 لیجسلیشن اگر کرتی ہے گورنمنٹ تو لیجسلیشن جو ہے وہ کرے۔ نمبر 3 یہ جو ریویو کا کہہ رہے ہیں ریزولوشن موو کر دی ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ دیکھیں اٹارنی گورنمنٹ نے تو اٹارنی جنرل کو انفارم کرنا ہے کہ وہ ریویو فائل کرے، نتھنگ ایلس۔ اس پہ پارلیمنٹ میں جانے کی کیا بات ہے؟ تو ایکٹ تو نہیں لے کے آ رہے ہیں، اگر تو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ سیکٹ امپلائیز کا ایکٹ بننے جا رہا ہے، کیونکہ ریزولوشن پارلیمنٹ میں آ گئی ہے۔ اور یہ ریویو پٹیشن ایک ودن 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ اگر ان کو دیتی ہے، گو ہیڈ دیتی ہے تو وہ فائل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 ایک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کرے کہ یہ جتنے بھی ملازمین ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جو نکل بھی چکے ہیں ہم ان کو کمپلسری ریٹائرمنٹ چلے کرتے ہیں، اور کمپلسری ریٹائرمنٹ کے تمام ریٹائرمنٹ بینیفٹس جو ہیں ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ پھر جو ہے گورنمنٹ اگر واقعی سنجیدہ ہے، یہ ایک سی ایم فائل کرتی ہے ریویو کے ساتھ آنریبل سپریم کورٹ میں، اور کہتی ہے کہ ہم نہیں نکالنا چاہتے ان ملازمین کو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو اس کے اوپر انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، وہ اسی ججمنٹ کو موڈیفائی کر دے گی۔ اچھا اس میں اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر جو تاثر دوسری طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس پر عمل درآمد کرنا ظاہر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اب تک جتنے ملازمین کو نکالا گیا ہے یا جو سلسلہ کم از کم چل رہا تھا وہ اب کسی طرح سے تھمتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ جو میری اطلاعات ہیں تو حکومت نکالا تو ظاہر نوٹیفیکیشنز تو ان وفاقی اداروں کے آ رہے ہیں، تو ان کو بحال کر سکتی ہے اس ضمن میں اس فیصلے کے موجود رہتے ہوئے، یا یہ پاسبل نہیں ہے اور حکومت کی یہ بات درست ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو کورٹ نے جو ایکٹ کو کیا الٹرا وائری کیا، اور وہ جو پریویس ایکشن تھا اس کے نتیجے میں یہ ہوئے ہیں۔ جو فردر گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے اور نوٹیفیکیشن کرتی ہے تو گورنمنٹ پہ بار نہیں ہے۔ پوری ججمنٹ میں کسی جگہ یہ نہیں روکا سپریم کورٹ نے کہ آپ ان فیوچر ان لوگوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، نو سچ فائنڈنگ از دیئر۔ گورنمنٹ، اور میں اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں اٹارنی جنرل کو، وہ ڈبیٹ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لا منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں، اور جتنی پوری گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے تمام منسٹر لے کے آ جائے، تمام اپنے لیگل ایکسپرٹس میرے سامنے بٹھا دے، اور میں ان کو بتاتا ہوں۔ اور یہ راستہ، یہ وہ بچے نہیں ہیں، پلیز تھنک اٹ، وہ بچے نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ وہ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس بہت پاور ہوتی ہے، اور میں نے یہ بتایا کہ وہ گورنمنٹ از کمپیٹنٹ ٹو ڈو اٹ، لیکن یہ صرف اور صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ یہ اسی طرح ملازمین، اب جو ریویو کی سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، 3 4 سال ریویو نہیں لگتا، اور یہ اسی طرح ملازمین بیچارے رلتے رہیں گے۔ ایک امید بندی تھی احتجاج کی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ واضح طور پر جو ان کی کوئی ایکشن کمیٹی ہے وہ واضح طور پر ان کو انٹیمیٹ کرے گورنمنٹ کو، اور 1 ماہ کا ٹائم دے کہ ہمیں 1 ماہ کے اندر بحال کیا جائے، اور اس کی جو صورت، میں نے آپ کو ساری صورتیں بتائی ہیں، ادروائز احتجاج ہوگا۔ تو گورنمنٹ چاہے تو ود ان اے ویک کر سکتی ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی مسئلہ فیصہ غورت والی بات نہیں ہے۔ سر اس وقت یہ بتائیے گا، ظاہر ایک تو اس کا پولیٹیکل ویو بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، اپوزیشن اس پر مسلسل بات کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی تو خاص طور پر ان کے ادوار میں ان لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھی، اور ظاہر جو پورا یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ آج نیشنل اسمبلی میں بھی شازیہ مری صاحبہ نے یہ بات کی، اور اس پر اپوزیشن چاہ رہی تھی کوئی ریزولوشن موو ہو، جس پر علی محمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس پر ہم ریویو میں جا رہے ہیں، اور اس پورے معاملے پر حکومت نظر ثانی کر رہی ہے اور حکومت ملازمین کے ساتھ ہے۔
क्विकली ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ हुकूमत इस वक्त बहाने कर रही है और ऐसे ही टाइम निकाला जाएगा या कोई संजीदगी आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं तो समझता हूँ सारे सियासत कर रहे हैं। मैं हर एक को ये समझता हूँ सारे सियासत कर रहे हैं। ख्वाह वो अपोजिशन का काम है बताना, वो बता रही है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर सिर्फ सियासत कर रही है और संजीदा नहीं है हुकूमत। अगर संजीदा हो तो ये विद इन ए वीक जो है वो सारे मुलाजमीन वापस आ सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि ये कौन सा लॉ है जो प्रिवेंट करता है, कौन सा कानून है? सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुत इख्तियारात होते हैं। खुदारा, ये गवर्नमेंट के पास जितने इख्तियारात हैं, हुकूमत के पास जितने इख्तियारात हैं, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। और जो है वो, लेकिन वो मुझे संजीदा नहीं लग रही। और अपोजिशन भी, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि वो भी इसके ऊपर सियासत करेगी। ये एक सियासी इशू मिल गया जो चलता रहेगा और ये आइंदा इलेक्शन तक चलता रहेगा। फिर आइंदा इलेक्शन की सियासत भी इस इशू के ऊपर होगी और ये मैं इसको देख रहा हूँ। ज़ाहिरी तौर पर ये किसी तौर पर भी अच्छा इकदाम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन वक्त हुकूमत इहा ॻाल्हि करे पई जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे उन ते नज़रसानी लाइ दरख़्वास्त हुकूमत पारां दाख़िल कराई वेंदी, पर अगर हुकूमत चाहे त इन ते अमल दरामद करण खां इन ते रोके भी सघे थी। ऐं ॿिया बि केतिरा ई ऑप्शन्स हुकूमत वटि मौजूद आहिनि, जीअं चौधरी साहब असांखे ॿुधायो, पर नियत में हिन वक़्त ताईं शक नज़र अचे पई। नई साईं, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज भी ॾींदा इजाज़त। अलाह।